Good evening to all of you. Is this audible, visible to all? Am I clear? Very good evening, Shraddhanjali. All clear? ठीक है। आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिवा, बिजनेस साइकिल ना। तो ये टॉपिक रो लिंक अच्छी इन्फ्लेशन चैप्टर सहित इन्फ्लेशन ऊपर डिस्कशन हमें इनफैक्ट करिथिले पूर्व लास्ट क्लास मानकरे हमें डिस्कशन करिछ ऑन इन्फ्लेशन नुहे कि हो। सो गत क्लास रे जहाँ जहाँ पढ़ी ता ऊपर किसी डाउट अच्छी का? Any doubt from the topics that we have discussed in the last class? समस्त जॉइन करी वाले? जॉइन करी वाले समस्ते? नाउ के बाकी अछन? ज्योति जॉइन करी वाला, वेरी गुड। यस, गुड इवनिंग, मु भल्ला अछि। व्हाट अबाउट यू? भल्ला अच्छा समस्ते? ओके। ओआईएसएफ पई सब एग्जाम पई जहां भी हमें पढुछे इकोनॉमिक्स रो बेसिक कांसेप्ट्स ऊपर डिस्कशन करूची। सो व्हाटएवर द एग्जाम यू आर अपियरिंग, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। तो मो ऑब्जेक्टिव होची ए सेशन रो टू मेक इकोनॉमिक्स इजी फॉर यू। इकोनॉमिक्स रो पूरा सिलेबस को इजी करवा, डिकोड करवा इन अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल वे रे, जेमि समस्त बुझी पारिबे। कम अच्छे मे भी आज भूल जाइए, आज क्लास अच्छे आमर ग्रेजुअली पिला जॉइन करेंगे। ओआईएसएफ श्रद्धांजलि सब परीक्षा ये हेल्पफुल हम, जहाँ भी परीक्षा अच्छी सब परीक्षा ये हेल्पफुल हम जो इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन आस। ठीक अच्छे, चलो ताले लास्ट क्लास रे हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कौन थिला, कौन पढुतले हम लास्ट क्लास रे? लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिले कैपिटल मार्केट ना, राइट? कैपिटल मार्केट तो लास्ट क्लास रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन थिला कैपिटल मार्केट, जोटी बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट हमें पढ़ी थे, लाइक आईपीओ, एफपीओ, शेयर है, सेबी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर पढ़ी थे, एनएससी, बीएससी। तो एमती अनेक इंपोर्टेंट टॉपिक हमें गत काली क्लास रे डिस्कस करथिले। ठीक सेमती आज हमें आउ कुछ टॉपिक को, इंपोर्टेंट टॉपिक को आसीबा। इन्फ्लेशन ऊपर तो बहुत पढ़ी हमें, आज पढ़िया हमें बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल पढ़िबा एवं इन्फ्लेशन प्लाट टाको हमें रिवाइज करबा। ठीक अच्छे। सो बिजनेस पार्ट को जीवा पूर्व जस्ट रिकैप, इन्फ्लेशन कहला हमें कौन बुझु? इन्फ्लेशन कौन? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन कहला हमें बुझुतले कौन?
सडनली प्राइस राइज ये तो प्राइस हाइक कौन कहली सडन प्राइस हाइक कौन कहली ऑल ऑफ सडन प्राइस हाइक तक हमें कहूचे इन्फ्लेशन क्लियर ऑल ऑफ सडन प्राइस हाइक तक हमें कहूचे इन्फ्लेशन तो सब्सटेंशियल राइज इन द प्राइस सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस तक कहूचे इन्फ्लेशन ना इन्फ्लेशन एवं बिजनेस साइकिल यार किसी रिलेशन अछि इन्फ्लेशन ने हमें पढ़ी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब ऊपर डिस्कशन होता लास्ट क्लास रिफ्लेशन ना बिजनेस साइकिल पहले आम कौन बुझे बिजनेस साइकिल कौन पढ़ते आम पढ़ा आज मत कहते बिजनेस जो अप डाउन हो सिंपल कथा कहूँ बिजनेस जो अप डाउन हो तार किसी इंपैक्ट अच्छी इन्फ्लेशन उपर प्राइस उपर कौन कहली बिजनेस अप डाउन होला बेले तार किसी इंपैक्ट अच्छी प्राइस उपर डेफिनेटली अच्छी तो यही सब टॉपिक उपर आम पढ़ा आज इन्फ्लेशन जस्ट रिकैप कौन कौन कही गोटे कही डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो डिमांड इंक्रीज हुए जो इन्फ्लेशन होता है आम कहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन देयर इज मोर डिमांड बट लेस सप्लाई कौन कहली देयर इज मोर डिमांड बट इफ देयर इज लेस सप्लाई जदि डिमांड अधिक एवं सप्लाई कम ताले हम ताको कौन कहबा कहबा डिमांड पुल इन्फ्लेशन आगु देखले सप्लाई साइड बा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जेतले फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज करी जाए कौन कहली फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज करी जिवो बा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा जेतले इंक्रीज करी जिवो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर एई कॉस्ट टा जेतले इंक्रीज करी जिवो ताको कौन कहंदे ताको कहंदे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन कहंदे दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एतिक जिनस हम पढ़ी है डिमांड पुल कॉस्ट पुश चलो ताको मेजर करथिला हम केमति ना सीपीआई डब्ल्यूपीआई एवं जीडीपी डिफ्लेक्टर तीन डायरेक्ट सीपीआई डब्ल्यूपीआई एवं जीडीपी डिफ्लेक्टर सेथरे हम ताको मेजर करथिले एतिक कथा एतिक रिकैप बा एतिक बेसिक नॉलेज हमर रहिबा दरकार एतिक बेसिक नॉलेज आमे जानिबा दरकार तो बिजनेस साइकिल पढुछ बिजनेस साइकिल इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऊपर डिस्कशन करूछ सो इन्फ्लेशन किछि पार्ट को मु डिस्कस कर देली नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा बिजनेस साइकिल now business cycle is related to growth and development now growth and development rate हम कौन देखछे ना एटा ला क्वांटिटेटिव and this is qualitative then कौन देखथिल ना this is development is both qualitative and quantitative development is both quantitative as well as qualitative now growth is only quantitative so growth and development there is internal interdependence तामाने कौन कहली इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन कहली इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एन इकोनॉमी क्वालिटी ऑफ लाइफ माने इकोनॉमी रो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी कौन कहली वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी सो देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्शियस पब्लिक पॉलिसी व्हिच कैन स्पेंड एंड इन्वेस्ट इन एरियाज like food nutrition health education shelter social security now why these topics are important for us or why these points matter for us kahi ki am pai matter kruche na objective kono economy re सबले गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन कहली इकोनॉमी रे सबले गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन ना गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव होची इकोनॉमिक ग्रोथ as well as economic development कौन कहली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव आम जदि कहबा कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को रिड्यूस करबा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जहा अछि ताकू रिड्यूस करबा जेमति कि कोन ना जेमति कि इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस कर परबा जेमिति कि मु कहबी पॉवर्टी जेमिति कि कहबी मालन्यूट्रिशन जेमिति कि हंगर ये सब
ये सब सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एवं गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन एटी सबले ना गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव आपको रिड्यूस करिया ना मोर क्वेश्चन होची जो हमें ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को रिड्यूस करूचे ताहले मते कोन हु प्लेज अ मेजर रोल ओनली गवर्नमेंट ओनली प्राइवेट और बोथ हु प्लेज अ मेजर रोल हियर मेजर रोल किए प्ले करिवो एई गुडाकर एई इराडिकेशन पई ए इराडिकेशन पई मेजर रोल कहार ना मेजर रोल होची कहार बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कौन कहली बोथ गवर्नमेंट सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर मो कथा बुझ पाले कौन कहली बोथ गवर्नमेंट एवं प्राइवेट या पई मेजर रोल प्ले करिवे हैला दी जनकर इंपोर्टेंस अछि नाउ यू कैन नॉट से कि ओनली गवर्नमेंट विल इराडिकेट पॉवर्टी malnutrition unemployment गवर्नमेंट केते पोस्ट देबो अनएम्प्लॉयमेंट इराडिकेट करिया पई दे परिबोनी गवर्नमेंट सो प्राइवेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड देन एटी हमको पूछवा दरकार बिजनेस साइकिल इज ऑल अबाउट प्राइवेट सेक्टर तो मते क्वेश्चन करियो को सर प्राइवेट सेक्टर रो इंपोर्टेंस कोन प्राइवेट सेक्टर रो सिग्निफिकेंस कोन करि परियो मते एटी क्वेश्चन कोन कहली प्राइवेट सेक्टर रो इंपोर्टेंस बा प्राइवेट सेक्टर रो सिग्निफिकेंस कोन मते कोंदु डेफिनेटली यार सिग्निफिकेंस अछि प्रथम कथा होची ये कौन करो ना इट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल सर्विसेज अवेलेबल ये अवेलेबल करेबो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी रे यदि ये अवेलेबल न कराए ताहले प्रॉब्लम कोन हो कोन कहली यदि अवेलेबल न कराए ताहले प्रॉब्लम कोन इफ नॉट अवेलेबल ताहले then price hike हो then कोन हो price hike हो बाधा को में इन्फ्लेशन बोली कहूजे कोन कहला हमें then price hike हो if not applicable जा को में इन्फ्लेशन बोली कहूजे येला प्रथम कथा येला प्रथम कथा द्वितीय कथा होची प्राइवेट सेक्टर कोन करे ना इट प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट है ना कौन करियो कहली ये प्राइवेट सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करियो इट सॉरी इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ना इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट बा रिड्यूस करियो अनएम्प्लॉयमेंट और रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करियो ताले मते एबे कोन प्राइवेट सेक्टर सिग्निफिकेंस अछि कि नहीं प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करियो कोन करियो कहली प्राइवेट सेक्टर आउ कोन काम ना प्राइवेट सेक्टर काम होची इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करियो कोन कहली प्राइवेट सेक्टर स्टिमुलेट करियो मध्य इकोनॉमिक ग्रोथ बुझ पाले मो कथा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर ताले मते एबे कोन प्राइवेट सेक्टर रा रिक्वायरमेंट अछि कि नहीं बुझिला प्राइवेट सेक्टर इंपोर्टेंस है समस्त बुझिला ताले प्राइवेट सेक्टर इंपोर्टेंस अछि ना बिजनेस साइड तो सर प्राइवेट सेक्टर कोन खाली यार ऑब्जेक्टिव सबले कोन ना कोन कहली प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कोन खाली बिजनेस करबा ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव मते कोन ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन versus प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस आ गोटे कोन कहली सोशल वेलफेयर मो कथा बुझी पाले सोशल वेलफेयर ये केमिति करछि प्राइवेट सेक्टर ना थ्रू सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इट इज मेंशनड इन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट मन रखिबे सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट ये सोशल वेलफेयर प्राइवेट सेक्टर करिथाए
सीएसआर अंडर रे कौन करे सीएसआर अंडर रे ये कौन करिवो ना सीएसआर अंडर रे ये पब्लिक वेलफेयर करिवो रास्ता घाट पानी बिजुली मध्य प्रोवाइड करि पारे कौन कहली रास्ता घाट पानी बिजुली प्रोवाइड करि पारे बुझी पाले मो कथा है इज दिस क्लियर ताले प्राइवेट सेक्टर में सिग्निफिकेंस बुझले एबे देखो बिजनेस साइकिल में कौन बिजनेस साइकिल में कौन देखुचे आउ हां आउ ये कौन करते जीडीपी भी इंक्रीज करछि नेक्स्ट पॉइंट कौन इट इंक्रीजेस जीडीपी जीडीपी बढ़ाउछि कि नहीं जीडीपी इंक्रीज करछि ये चलो ये गला प्राइवेट सेक्टर इंपोर्टेंस कौन ओके एबे देखो एबे आसा इकोनॉमी पर मतलब देखो इकोनॉमी ग्रो भी करूछि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होछि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होछि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होछि कौन कहली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होछि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होछि ताले एटा कौन कहूछि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो डाउन माने इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो डाउन माने कौन प्रोडक्शन अधिक होछि प्रोडक्शन अधिक होछि केतेबेले एवं प्रोडक्शन कम होछि केतेबेले एवं प्रोडक्शन कम होछि केतेबेले फ्लक्चुएट करूछि कौन कहली फ्लक्चुएट करूछि तो याकू ही कहूछ हमें बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी यस संकल्प करेक्ट श्रिया यू जॉइन लेट टुडे हमें डिस्कशन स्टार्ट कर सारे ऑलरेडी आज पढ़ुଛନ୍ତି କିଛି इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिजनेस साइकिल सो बिजनेस रे बा इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर आर डिफरेंट फेजेस कौन कहले देयर आर डिफरेंट फेजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन प्रथम कथा है बूम डिप्रेशन स्टैग्नेशन स्लो डाउन रिसेशन रिकवरी एमती अनेक गुड़े कौन कहली एमती अनेक गुड़े इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी एमती अनेक गुड़े इंपोर्टेंट फेज अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुझे कि नहीं नो प्रॉब्लम जॉइन लेट चलो बुझे जो एक्टिविटी गुड़ा सब बुझे कि नहीं एक्टिविटी बुझे सो देयर आर डिफरेंट फेजेस इन एन इकोनॉमी हमें बुझा गोटे पर गोटे इकोनॉमी कौन सो यदि हम इकोनॉमिक फेज देखा यदि हम एक्जाक्टली फेज को आसीबा ताले केते प्रकार फेज बिजनेस साइकिल रे 4 phases there are 4 important phases कौन डिप्रेशन रिकवरी बूम एंड रिसेशन कौन कहली डिप्रेशन रिकवरी बूम एंड रिसेशन दिस क्लियर पहले हमें देखिए वन बाय वन विल डिस्कस फर्स्ट हमें देखिए व्हाट इज डिप्रेशन डिप्रेशन कहले हमें कौन बुझ सो डिप्रेशन 1929 डिप्रेशन ना कथा समझ सुनियो कि 1929 ने डिप्रेशन आ डिप्रेशन एक्जाक्टली हुए कौन सिंपल भाषा रे कहू बुझन जेतोले डिमांड कमी जाए कौन कहली जेतोले डिमांड कमी जाए जेतोले एग्रीगेट डिमांड कमी जिवो ऑटोमेटिकली सप्लाई कमी जिवो कौन कहली ऑटोमेटिकली सप्लाई कमी जिवो कि नहीं सप्लाई कमिले प्रोडक्शन कमी जिवो प्रोडक्शन कमिले इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जिवो ताले कौन कहली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी लो एग्रीगेट डिमांड so automatically it will decelerate instead of acceleration in the economy instead of acceleration in the economy there is deceleration in the economy टा decelerate करियो लागे बुझ पाले कि नहीं मो कथा केतेबेल ना only when there is low aggregate demand because economics कोन economics is all about demand and supply economics is all about
economics is all about demand and supply. The next is the inflation being comparatively low. मते कहूँ inflation टा low होबाटा better, inflation low होबाटा better ना high होबाटा better? inflation low होबाटा better ना high होबाटा better? minimum inflation or inflation low होटा better, but the zero inflation is it better for the economy? No. inflation जते बढ़िबो माने बहुत अधिक होबनी, but minimum inflation is better, low is better, so minimum is required कि नहीं? minimum inflation is required. minimum inflation नहले हबनी. minimum inflation कहूँ मन को रेट ये पेन रेट 10 टंका 500 वर्ष धर कि 100 वर्ष धर कि पेन रेट 10 टंका ही अछि, ताले प्रोड्यूसर पे प्रॉब्लम ना. so while thinking in economics जतल भाबुछन आपण you cannot think only about the consumer, you have to think about the producer. हां कि नहीं? आपण दी साइड रु भाबिबे, प्रोड्यूसर कथा भी भाबिबे, कंज्यूमर कथा भी भाबिबे. प्रोड्यूसर किए जे प्रोडक्शन करूछि, कंज्यूमर सबले कोन चाहिबो? कंज्यूमर चाहिबो मते कम टंका रे जिंस मिलु, प्रोड्यूसर चाहिबो मते अधिक टंका केमदी बिजनेस हो मोर. कौन कहली ये चाहिए कंज्यूमर कौन चाहिए ना कंज्यूमर चाहिए मु कम टंका रे पाए माने लो प्राइस रे पाए, ये चाहिए मु लो प्राइस रे पाए. प्रोड्यूसर चाहिए मु हाई प्राइस रे बिक्री करे. बुझपड़नी मो कथा? तो गोटे चाहिए लो गोटे हाई. सो इन्फ्लेशन इंपैक्ट करबो कंज्यूमर को, ठीक सेमती डिफ्लेशन इंपैक्ट करबो प्रोड्यूसर को. सो मिनिमम इन्फ्लेशन इज गुड फॉर हुम? गुड फॉर द प्रोड्यूसर. मिनिमम इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द प्रोड्यूसर. प्राइस स्टैग्नेशन न रहिबा दरकार. कौन कहली? प्राइस स्टैग्नेशन न रहिबा दरकार हला. स्टैग्नेशन नहीं कि प्राइस टा डेवलप हुआ दरकार. देन नेक्स्ट डिप्रेशन. आउ कोन ना एम्प्लॉयमेंट कमिवो कि नहीं? मते कहंतु डिमांड कमिला, डिमांड कमिले प्रोडक्शन कमिवो, माने सप्लाई कमिवो, सप्लाई कमिले प्रोडक्शन कमिवो. एवं जदि प्रोडक्शन कमे ताहाले मते कहंतु अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमिवो ना बढ़िवो? सिंपल, पूरा सिंपल जिंस. प्रोडक्शन कमिले अनएम्प्लॉयमेंट रेट टा बढ़िवो ना कमिवो? प्रोडक्शन कमिले अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िवो. केने प्रोडक्शन बढ़िले कंपनी रे, प्रोडक्शन बढ़िले से रिक्रुटमेंट करिवो, अदरवाइज काहे रिक्रुटमेंट करिवो? कंपनी जदि काम नाही ताले एटा बुझिला एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू. ताले एई जगह रे लेट्स से डिप्रेशन चली छि, ताले कंपनी कोन करिवो? एठी कंपनी कॉस्ट कमेयो, प्रोडक्शन कॉस्ट कमेया पई कंपनी कोन करिवो ना फोर्स्ड लेबर कट करिवो. प्रोडक्शन कॉस्ट को कमेया पई कोन करिवो ना फोर्स्ड लेबर कट करिवो, जबरदस्ती किसी लोक को बाहर कर दबो काम. बुझेला? रिट्रेंचमेंट कर दबो, प्रोडक्शन कमे नहीं पारे बा एमती ही जाई पारे. एई ग्राउंड रे क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ही जाई पारे. कोन कहै? प्रोडक्शन कॉस्ट आपण कमेया पई बा कंपनी को प्रॉफिट को नवा पई, प्रोडक्शन कॉस्ट कमेया पई बा कंपनी को प्रॉफिट को नवा पई जेतले कॉस्ट रिड्यूस करा जाए, क्वालिटी ऊपर इंपैक्ट न पड़िया दरकार. याको कहे क्वालिटी वर्सेस इक्विटी इश्यू. एथिक्स पढ़िला बेले पढ़िबे. कोन कहली? क्वालिटी वर्सेस इक्विटी इश्यू. कंपनी को लाभ को नवा पई से परिस्थिति को नियनि जेमति कंपनी ता जो प्रोडक्ट हो से कंप्रोमाइज करियो, क्वालिटी कमी जे. बुझिला? एटा एथिक्स क्लास रे पढ़िबे तो मेंस पॉइंट डिस्कस करियो. नाउ डिप्रेशन कोन हमें देखिले. नाउ डिप्रेशन पर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? लेट्स से इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. ताने लो डिमांड, लो सप्लाई, लो प्रोडक्शन हो गोटे इकोनॉमी. then what is the next stage? The next stage is to recover the economy. low production phase रे economy को एटी survive करिया को पड़ियो. so low production phase might be depression, recession or slowdown. ताले एटू कोन कहले हमें recovery phase. recovery phase माने we here will try to increase the aggregate demand in the economy. economy रे हम एटी demand बढ़ेबा, total demand बढ़ेबा को चेष्टा करियो. ताले डिमांड बढ़िले कोन हो ना? डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो, प्रोडक्शन बढ़िले जीडीपी बढ़िबो, जीडीपी बढ़िले नेशनल इनकम बढ़िबो, नेशनल इनकम बढ़िले पर कैपिटा इनकम बढ़िबो. सिंपल. सो प्रोडक्शन प्रोसेस एटी एक्सपैंड करिवो, न्यू इन्वेस्टमेंट बढ़िबो. यदि आपनकर डिमांड बढ़े, जेतले आपन डिमांड बढ़ुची कोन पे? ऑनलाइन फूड डिलीवरी पई, तेबे ही तो स्विगी जोमाटो चली परुची. आपनकर डिमांड जेतले बढ़ुची ट्रांसपोर्टेशन पई, तेबे ही तो ओला उबर चलुची. तो डिमांड न रहले केमति नुवा स्टार्टअप आसी. so demand leads to creation of more startup. so production process केते बेले expand हला ना? when demand increase, demand aggregate demand को increase करा गला इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करी हला.
सो डिमांड अपवर्ड जीवो इन्फ्लेशन भी अपवर्ड मूवमेंट करिवो इन्फ्लेशन भी अपवर्ड मूवमेंट करिवो इन्वेस्टर को जो लोन मिले से लोन टा केमती मिलिया दरकार चीप लोन और हाई प्राइस लोन चीप लोन माने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन चीप लोन माने कोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिले ताको कोंदी चीप लोन बुझी पाले ताको चीपर मिलिया दरकार सो प्रोडक्शन बढ़िबो न्यू एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी बढ़िबो कारण हम देखले रिकवरी फेज रो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकवरी फेज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकवरी फेज कोन ला जोमाटो अधिक नै जाउची अधिक नउची चार्ज हो ठीक है चला एटा ताले बुझिले न्यू एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज कोन होची एठी रिकवरी फेज रे कोन होची ताले एठी कोन करे गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट एठी रिकवरी फेज को आसीया पई गवर्नमेंट कोन करे ना गवर्नमेंट यूजुअली गो फॉर अ टैक्स ब्रेक यूजुअली गो फॉर इंटरेस्ट कट कोन करो इंटरेस्ट कट करियो है देयर इज इंक्रीज इन सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय मानकर सैलरी को बढ़ाई दिए कोन करियो एम्प्लॉय मानकर सैलरी को बढ़ाई दो सो रिकवरी फेज एम्प्लॉय सैलरी बढ़ेले कोन हो तो सर एम्प्लॉय सैलरी बढ़ेले लाभ कोन एम्प्लॉय सैलरी बढ़ेले लाभ कोन लाभ होला त डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़ले प्रोडक्शन बढ़िबो ठीक कथा हो सो 1929 ग्रेट डिप्रेशन कथा कहली यूरो अमेरिकन इकोनॉमिक्स द रिकवर्ड आउट ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन विथ द हेल्प ऑफ द ए जो मेजर्स ऊपर डिस्कशन कली टैक्स ब्रेक इंटरेस्ट कट एगुडा करके 1929 रे दे केम आउट हैला इंडिया रे एमति किछि हिची आ हिची 1927 नु 2002 1927 नु 2002 then is boom the next phase is boom the economic activity recover हे गला फास्ट टाइम देखले स्लो डाउन होला परे ताको हम रिकवर कले रिकवर होला पर हम देखले कोन होला रिकवर करी ग्रेजुअली बढ़ु सो बूम मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल ऑफ सडन बढ़ी जो इकोनॉमी रे इकोनॉमिक एक्टिविटी माने प्रोडक्शन कोन बना ऑल ऑफ सडन बढ़ी जो यदि प्रोडक्शन ऑल ऑफ सडन बढ़ी जाए ताले तार इंपैक्ट कोन पड़ियो कोन कहल यदि प्रोडक्शन ऑल ऑफ सडन बढ़ी जाए ताले तार इंपैक्ट कोन पड़ियो अपवर्ड फ्लक्चुएशन हो जिवो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जिवो सो रिकवरी फेज could slow down for recover हे गला recession depression at the times the measure taken by the government as well as the private sector it will put the economic activity will increase here ताको जहा हम कहले कोन that is called boom ताले boom रे कोन होउची what happens in boom कोन कहली boom रे कोन होउची देखो ये कुछ an accelerated and prolonged increase in demand demand टा कोन long term रे demand बढ़िबो demand picks up to such a high level that it exceeds sustainable output sustainable production कोन कहली sustainable output एवं sustainable production आसीबा दरकार market force mismatch माने demand and supply रे mismatch ताको कोन market force mismatch economy might face structural problems like shortage of investable capital lower savings creation of sellers market so इस कोट ना boom रे हमको देखियो बुझी पाले मो कथा बुझी पाले के नहीं तले मते कोन रिकवरी पर boom हला ना boom पर रिकवरी हला सिंपल क्वेश्चन ओ क्वेश्चन होची रिकवरी पर boom हला ना boom पर रिकवरी हला कौन हला का पर रिकवरी पर बूम और बूम पर रिकवरी हमें देखले बूम कौन ना बूम इज अपवर्ड फ्लक्चुएशन so supply side pattern of the economy starts lagging behind the pace of accelerated aggregate demand so हठात डिमांड बढ़ी जिवो ताले कोन हो डिमांड हठात बढ़ी गले सप्लाई कमिवो कि नहीं यस हठात डिमांड बढ़ी गले सप्लाई कमी जिवो जोटा हमको यूएस इकोनॉमी रे देखियो मिलथिला ताले मते केतरा क्वेश्चन रो आंसर दे दियंतु बूम समय रे एग्रीगेट डिमांड कोन हो बूम समय रे डिमांड कोन हो aggregate fall there is a downturn in the aggregate fall correct so demand कमिले production कमी जिवो demand reduces तो production reduces
So producers, they will cut down their production level. New employment opportunities not created. New employment opportunities are not created. Simple. So demand fall kale producers, they will start cutting down their labor force. Already कहली ताले एटी गवर्नमेंट रो फंक्शन कोन ना, गवर्नमेंट हैज टू रेस्क्यू द इकोनॉमी. गवर्नमेंट को एटी इकोनॉमी को बचाइବାକୁ पड़ियो. Next is recession. Recession is same that of your depression. The mild depression को recession कहवा जाए. Simple जदी कहबी mild depression is recession. US subprime crisis जाको हम कहूचे. तो देखला हम कोन, what is this recession? Recession is nothing but mild depression. एटी हुए कोन? डिमांड कोन हो कमी जीवो डेफिनेटली. Inflation remains lower, inflation low, employment rate falls, unemployment rate goes, obviously. Demand कमिला माने तार repercussions बा consequences पढ़ियो. Industries resort to price cuts, price cut हो एटी. कौन कहली एटी प्राइस कट देखिया को मिले. बुझे गला रिसेशन कोन ना डाउट हो जदी को. बिजनेस साइकिल इन सिंपल टर्म डिस्कस कर. चला आछिया केतरा क्वेश्चन पूछ ले. एटा देखिलो. When too many funds are hunting down too few goods, the probable result of inflation is called. The probable result of inflation here is called. आंसर अच्छी हो देखियो तुम एथिक्स. तुम एथिक्स चेक करियो के जन आंसर थिले भी न दे कहउछन. आंसर न दे को ethics test kare. Demand pull inflation. Okay. Next, when there is high inflation in the economy, how will it affect the supply? High income हेले ये supply ऊपर केमती impact पकेबो को. हम लुचे देख परियो. कौन impact है? Supply of money increases. ठीक अच्छी. कौन कहली supply of money increases. Next, which of the following class will not be negatively affected by higher inflation? Which of the following class will not be affected by higher inflation?
डी गला which of the following mentioned authority is responsible to measure inflation in India? Inflation किए measure करंडी? Just a quick response. अमीरों को फर्क नहीं पड़ता है. ठीक. चलो इटा ठीक है. Which of the following situation contribute to cause inflation situation in an economy? Contribute to cause inflation situation in an economy. B. ठीक अच्छे. आउ टिके देखिबा केतरा क्वेश्चन केतरा कांसेप्ट. डिमांड पुल एवं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भितर कोन डिफरेंस जदि आमे डिस्कस करिचे आको पूर्वरु जदि एई कांसेप्ट को आमे डिस्कस करिचे पूर्वरु डिमांड पुल इन्फ्लेशन समय रे मनी सप्लाई इज एक्सेस और लो. केतरा क्वेश्चन लिक्विडिटी इज हाई और लो. डिमांड पुल रे लिक्विडिटी इज हाई और लो. कौन कहले डिमांड पुल रे लिक्विडिटी इज हाई और लो. High liquidity. Demand pull inflation is good for the economic growth or bad? Demand pull inflation, it is good for the economic growth or it is bad for the economic growth? Both. But अल्प rate रे it is required नहीं कि slow rate रे it is required. मतलब कौन तो demand pull inflation ने production बढ़े ना कमे. Demand pull inflation ने production टा बढ़े ना कमे. Demand pull कौन हो ठीक रे को भाभी. There is a more demand. तल production बढ़ी हो ना कमे हो. Situation पुन कोड आसला. Situation कोड आसला. प्रोडक्शन कम बोली प्राइस बढ़े. डिमांड अधिक बोली प्राइस बढ़े. मोर डिमांड लो सप्लाई. डिमांड टा अधिक ना सप्लाई कम प्रोडक्शन कम अच्छी. बुझीला मो कथा. यदि डिमांड जति प्रोडक्शन हो जाता ही पारता. अच्छा बोथ टा प्रीवियस क्वेश्चन ठीक अच्छे. बोथ टा प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है. डिमांड पुल कौन हो ना प्रोडक्शन इंक्रीज प्रॉफिट अधिक हो ना. कॉस्ट पुश हवा पछरे कारण कौन आउथर कहबी देख बुझौ कहू जाउ शुण.
बर्तमान मत को डिमांड अधिक है, डिमांड अधिक अच्छे सप्लाय से अनुसार ना, सप्लाय लो, यदि डिमांड अधिक सप्लाय लो ताल सिचुएशन कौन हम, प्राइस बढ़ीगला, ताल प्राइस बढ़ुची प्राइवेट सेक्टर कौन करियो, प्राइवेट सेक्टर देखियो डिमांड बढ़िलानी, प्राइवेट सेक्टर कौन करियो देखियो डिमांड बढ़िलानी, तो जेहेतु डिमांड बढ़िला प्राइवेट सेक्टर कौन करना प्रोडक्शन भी बढ़ी दो, प्राइवेट सेक्टर कौन करियो ना प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दो, बुझ पाले मो कथा, प्रोडक्शन बढ़िला कौन पाई प्रॉफिट बढ़ेगो ना, ये डिमांड को मीट करिया पे, बुझेला एबे बुझेला कि नहीं, सिंपल जिनस। बहुत बढ़िया, तर मतलब कॉस्ट पुश टा कहीं हुए, व्हाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पछर कारण कौन, फैक्टर कॉस्ट बढ़ी जाउची, सिंपल कौन हो जेडी फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज जाउची, बस इंक्रीज्ड कौन कहली इंक्रीज्ड फैक्टर कॉस्ट, कौन कहली इंक्रीज्ड फैक्टर कॉस्ट, है चलो ठीक अच्छे, गोटे क्लारिटी आसीगला आमर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंपैक्ट एटा टेम्पररी लीड्स टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई प्राइस लेवल, सो प्रोडक्शन कमी गले जीडीपी कमी जीव, कॉस्ट पुश रे कोन प्रोडक्शन कमी जीव, इट लेस प्रोडक्शन सो लेस जीडीपी, एटी डिमांड पुल कौन होता ना, डिमांड पुल मोर डिमांड मोर प्रोडक्शन, डिमांड पुल कौन करना मोर डिमांड मोर प्रोडक्शन, so there is a full employment of resources, aggregate supply increase, जोटा जदि एटा न बुझी होची श्रेया गोटे इन्फ्लेशन नो क्लास करिथिली एठी 9 आउट 10 टा जो हमर क्लास चलची इन्फ्लेशन नो क्लास हेची मोते 4th की 5th सेशन सेटा टे देखि देबो, प्लेलिस्ट को जीवो इकोनॉमिक्स रो से प्लेलिस्ट जाय कि इकोनॉमिक्स रो इन्फ्लेशन क्लास ता देखि देबो, कारण एटा को पूरा डिटेल जाउन, एटा जस्ट ओवरलुक करूची जेहेतु मु पढै छी ऑलरेडी एवं बिजनेस साइकिल आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन्फ्लेशन कनेक्टेड, सो इन्फ्लेशन को लेस एम्फासिस दोची, यदि इन्फ्लेशन ऊपर डाउट आछी त इन्फ्लेशन सेशन ता देखि दो, है तो प्रोडक्शन बढ़ी जीव एवं 100% बुझी पारियो, 100% बुझी पारियो, न बुझी पाले मते पचारियो कालर क्लास बुझे दे, राइज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़िबो, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोन हबो रिड्यूस हे जीव, अपवर्ड रिविजन ऑफ वेजेस कि नहीं, कौन कहले अपवर्ड, देयर विल बी अपवर्ड रिविजन ऑफ वेजेस, बोला सो ये गला सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन रो इंपैक्ट, चला ताले ठीक अछि, जदि किसी डाउट रहला पचार, एनी डाउट, if you have any doubt then raise your question. इन्फ्लेशन रिड्यूस करिया पई डिफरेंट मेथड पढितला हमें, मॉनेटरी, फिस्कल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेड, सो मने थिबो एडमिनिस्ट्रेटिव, हां 31/5 रे हेतला, मॉनेटरी, फिस्कल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेड ये सब होइतला, ये सब दीज आर द मेजर्स टू टैकल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी मेजर्स हमें देखले क्रेडिट कंट्रोल मेथड लाइक सीआरआर, एसएलआर यार इंपैक्ट कोन, फिस्कल कंट्रोल देखिथिले, ट्रेड फिस्कल रे हमें देखिथिले डायरेक्ट टैक्स को कोन करा जो इनडायरेक्ट टैक्स देखियो कार मन अछि
डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस हवा दरकार ना इंक्रीज हवा दरकार डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हवा दरकार ना रिड्यूस हवा दरकार देखिए कि मन रखि एवं इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस हबो ना इंक्रीज हबो डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज वेरी गुड ठीक अच्छे ताले सब इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ थिला गला आपको पढ़िए जदि किसी डाउट अच्छी पचार अदरवाइज विल वाइंड अप दिस सेशन ताले कौन देखिले आमे आज क्लास रे कौन कौन पढ़िले कौन डिस्कस कले आमे आज क्लास रे बिजनेस साइकिल देखिले शिखिले कौन ना रिकवरी बूम कौन देखिले रिकवरी बूम पढ़िला कौन पढ़ला रिसेशन डिप्रेशन इन्फ्लेशन रिसेशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब देखिले पढ़ी के आस आज गोटे छोट टॉपिक थिला और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कवर रही गला स्टिल जदि डाउट रुहे ताले पुणी देखिबा नेक्स्ट क्लास एनी क्वेश्चन किसी क्वेश्चन अच्छी जदि नहीं छोट बेले स्कूल जाऊे मन अच्छी स्कूल गला बेले टाइम पूर्व जो टीचर छाड़दे बेस्ट टीचर किए क्लास रे जहाँ पढ़ाओ बट टाइम पूर्व जी छाड़दे सी होती भल टीचर क्लास टाइमिंग पूर्व सरिया पूर्व जी छाड़दे सी भल टीचर कि ना स्कूल पढ़ला आज मुझे भल टीचर हेबी 9टा ରୁ 10ଟା क्लास खेल छुट्टी मिलूला स्कूल पढ़ला बेले जो क्लास 45 मिनिट क्लास जो सार छाड़ीदे 30 मिनिट आगु तर 6th पीरियड टा थी आमर धर मनकर अच्छी साइंस 7th पीरियड टा अच्छी खेल छुट्टी साइंस सार को कौन करते गढ़ा तारीख करते सर 45 मिनिट बदल आप 30 मिनिट पढ़ा 15 मिनिट छाड़ दिया सो दैट साइंस क्लास लास्ट 15 मिनिट और खेल छुट्टी 45 मिनिट घंटा आम खेल पार नुह कि आज सेम कंडीशन हाँ जो टीचर न आसले सी आहरी बढ़िया बिल्कुल ठीक अच्छे आज टाइम अच्छी चलो आज खेल छुट्टी 10 मिनिट आगु दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आउ जहाँ देखिए नेक्स्ट क्लास काली पढ़िया थैंक यू गुड नाइट काली आसो समस्त पढ़ी आ गोटे नुआ टॉपिक ऊपर काली डिस्कस करेंगे काली बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी फॉरेन ट्रेड है काली पढ़ेबी एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर फॉरेन ट्रेड बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ठीक अच्छे थैंक यू ठीक अच्छे ज्योति देख आज टॉपिक अगेन यदि डाउट आसे पुणी पचार डोंट वरी मच